So first of all, I would like to welcome everyone, each one of you who have took out their time today and have decided to participate in this learning circle. As you might already know that today's theme of our Prerna circle, which objective is also knowledge sharing and reflection. This time we are having a theme of evidence-based whole child development. And to discuss on this theme and to brainstorm more and build our knowledge, we will be supported by three panelists who are from very two renowned organizations. Uh, Hello, might I request to mute yourself if there is any background noise? I'm really sorry. Sorry. Yeah. So as I mentioned, to discuss on this particular theme, evidence-based whole child development, we have three panelists from two organizations. One is the Teacher Foundation, and from Teacher Foundation, we have Miss Maya Menon, who is the founder director of the organization. Teacher Foundation is actually a 19-year-plus old organization and has been driving change through enabling and building the capacity of school staff, principal, and administrator in 9+ countries. I will request Ms. Maya Menon to come and introduce herself a bit to all the participants, if that's all right. Hi, namaskar. Thank you, ma'am. Apart from that, we have two panelists from International Center of Research of Women, ICRW. This organization has been trying to create evidence around what works to reduce inequality and poverty. And the evidence they are creating in this field, they are trying to leverage that to take it out as in solutions for driving change, to use it as an advocacy, and to also use it in consulting and animate program design. I request Ms. Nasreen and Dr. Prerna to introduce themselves to the participant. नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा है और थैंक यू वेरी मच इनविटेशन के लिए. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. जोहार, मेरा नाम नसरीन है और मैं भी प्रेरणा के साथ ICRW में हूँ. Thank you, Nasreen. Thank you, Dr. Prerna. I will. Before we start, I will just share an overview of session, how we are thinking to have this discussion. हमारा 30 मिनट के panel wise presentation होगी. Teacher Foundation will be sharing their expertise and experience with regards to whole child development and how they have been able to leverage drive this level of change amongst all the children around the world. And the ICRW will be sharing their experience in creating data, and also how the bringing in gender perspective is very critical, and how they have been leveraging it to provide whole child development and to drive change in that area. After that 60 minutes of presentation, we will be opening the house for question answer round. I will request all the participants to share their questions, to share their thought, anything which you would like to discuss with Ms. Maya or Dr. Prerna and Nasreen. The house will be open for entirely another 40 minutes, and please don't hesitate in terms of any language. Questions in the language of Hindi and English are both are appreciated. Your participation is highly appreciated, so the more questions you ask, the more learningful this session will be. Now I will request Ms. Maya to take a stage and share on this thematic area. If there is any permission required on the back end to present the screen, please let me know. No, I think it's there. Thank you. So thank you, Parul. Thank you, Sampoorna, Project Sampoorna, for organizing this event. So I'm just gonna, I hope I can, and my colleague is also here, so in case something is not very clear, he will let me know too. Okay, so thank you, Sampoorna, for your interest in the whole idea of whole child development, social emotional learning, teacher well-being, student well-being. So I've titled my presentation as Teacher Well-being Equals
student well-being. Teacher Foundation, as our name suggests, we work with teachers, and it is 20 years. 2002 is when we began our work in this space. We work with teachers in order that they can actually make learning meaningful, enjoyable, and memorable for children. And we work with both government schools and private schools and all the schools in between. But our work is essentially with Indian school teachers. So Parul said that, we worked in other countries, but it's actually with teachers who are teaching in Indian schools, just to let you know that. Okay, so now, so an overview of this presentation. I'm going to be talking briefly about what is whole child development. What do we mean by saying teacher well-being? How is teacher well-being linked to student well-being? And I hope I'm going to go slow so that I'm not so, I understand Hindi perfectly, but I won't be able to switch into Hindi as fluently as many of you would be. So in case you have to ask a question, please feel free to ask. So this is the overview. What is whole child development? What is teacher well-being? How is teacher well-being linked to student well-being? And then, of course, Teacher Foundation's two-pronged approach through what we call the whole school quality circle time model and approach. And I'll talk to you a little bit about that, as well as the Indian social-emotional learning framework, which is a resource that we've created after 5 years of research in the SEL space in India, when nobody was talking about SEL. So what do we mean by whole child development? Basically, whole child development is about teaching to the whole person. When we say the whole person includes the intertwining of the socio-emotional aspect of the person, the physical aspect of the person, the creative aspect of the person, the cognitive or intellectual capacities. So all these aspects need to be considered when we are talking about whole child development. And why do we look at whole child development? Increasingly, across the world, people are talking about WCD, whole child development, basically to ensure the child's well-being, learning, and overall growth. Growth both physically as well as mentally, emotionally, spiritually. So then what is teacher well-being? It isn't very different from whole child development in a sense. It is again the intertwining of the teacher's own capacities, socio-emotional capacities, physical capacities, creative capacities, and cognitive or intellectual capacities in order to ensure their well-being, learning, and growth. So TTF and teacher well-being, because Teacher Foundation in these last 20 years, we have worked with over nearly 90,000 teachers. It's still a drop in the ocean, but because we have about 8 million teachers in our country, but still it's a significant segment of the teacher population. And we have quite a deep understanding of teachers. And we believe, we work with teachers to help schools become gentler, happier places for students, using a method called the whole school quality circle time approach, which has been spearheaded for many years, for the last 30, 35 years by Jenny Mosley in the UK. She's the creator of the model. And TTF and Jenny have been working for the last 20 years. So we've been working in this space for 20 years. And our whole aim is to help teachers be gentler, warmer, happier with children. And the interesting thing is that teachers love it. Teachers love the QCT approach, quality circle time approach, because of its humane, person-centered approach. It's another matter, are teachers able to quickly transfer the same, approach to children, but they love it because they know intrinsically that's the right way for children to learn. The children need to be happy in order to be able to learn. So what factors enable teacher well-being? There's been a lot of work, particularly in the past 2 years because of the pandemic, on teacher well-being, partly because everybody has been concerned about teachers as frontline workers during the pandemic, who've had to bear the brunt of trying to cope with a completely changed circumstance as far as work is concerned. So what factors enable teacher well-being? They need to feel respected professionally and personally. And that is actually a very difficult thing in a country like ours.
And I'm not just saying in, in the states that you work in, whether it's Jharkhand or Telangana or any of the other states in our country in terms of government schools. It is a problem with all teachers in all schools, whether urban or rural, private or government. Teachers are not necessarily or don't necessarily feel respected for themselves as people as well as professionally. They need to feel that work demands are realistic. They need to feel that the demands being made of their time is useful, meaningful, and is realistic. Too much is not being expected of them. They need to feel they have autonomy. They need to feel in control. And a lot of times our teachers don't feel in control. They just feel that they have to just carry out orders of the Department of Education, orders back from the government, orders from the principal or the school management or the head teacher and so on. And if we're talking about teacher well-being, we can't talk about it separate from providing respect to the teacher, making work realistic and meaningful for the teacher, and providing teachers personal control and autonomy for their own work. Apart from that, there are other factors that enable teacher well-being. One is ensuring positive work relationships in the school environment. The second is that the school management, the department, the block education officer, the head teacher, they need to make sure that the work conditions are nurturing, make teachers feel that they are valued. It could be sometimes as simple as providing tea and coffee, or it could be that they have a place to sit in the form of a staff room, or that they have a decent toilet to go to. Those are all can be considered nurturing work conditions. The other is a responsive leadership, a leadership in the school that is responding to what teachers need in order that they can do well, do the best they can for their children, for their students. Regular opportunities for professional learning. We can't separate teacher well-being from professional learning and professional growth. Anybody, all of us, we all feel better when we feel that we are purposefully employed and we are doing something effectively and to the best of our capacity. And lastly, clear and consistent policies. This is important because a lot of times, particularly in our government schools, what happens is that there are good policies, but then suddenly that policy changes and something else comes on. So if there aren't clear, consistent policies that are used, for an extended period of time, people will get just fed up and then they just sort of say, okay, what's the point? I'll just do whatever I'm asked to do. I don't have any control. I don't have any autonomy. So this is important. We have to be considering teacher well-being in the context of what is happening in the school ecosystem. So how can schools foster teacher well-being? One, we believe at TTF, we definitely advise and suggest and recommend to schools that they need to provide listening systems with the school. Provide listening, sorry, not the school, within the school. I'll talk about what we mean by listening systems because we always say that a caring school is a listening school. You can't talk about teacher well-being unless you have an environment of care, and you can't be caring to the key stakeholders of the school. In other words, teachers listening to each other, head teacher listening to the teacher, teachers learning to listen to children, children learning to listen to each other. The other is, of course, building in opportunities for teachers to emotionally connect with each other, which means that teachers need to have time to talk to each other in an engaging, enjoyable manner. It could be once a month. It doesn't have to be every day, but a time when they're just spending time as fellow professionals together in the school environment. Encourage self-care amongst teachers. They need to look after themselves. They need to look after them physically, emotionally, mentally, spiritually. They need to be looking after themselves. So these are things that schools need to be able to encourage in order to foster teacher well-being. So then that brings me to my next question. How is teacher well-being linked to student well-being? Because eventually we are looking at, whole child development. When teachers feel cared for and supported, they correspondingly care for and support students.
it requires a Mahatma, so to speak, to say that, okay, despite whatever, whatever people tell me or do to me and all that, I will still be a good, capable and gentle person with my children, or with my students, or with the people I work with, and so on. It requires an extraordinary human being to do that. A lot of times teachers do to children what others do to teachers. But if the education department official talks down at a teacher, the teacher will immediately, automatically talk down to the children. So if we're looking at teacher well-being, we have to create a culture on top of people listening to each other, people listening to teachers, and people being respectful of teachers, people expecting the best of teachers. The others, of course, positive relationships with students are vital for student learning. I mean, I know, a lot of teachers have this notion and are conditioned partly because of their own schooling experience and all that. If I'm a strict person, and if I'm a really strict, firm person, I will keep the children under my control and I will be able to teach. And that's the best way for me to teach. But actually, there's enough research from across the world, and including India, which says that if you have an emotional connect with the children will go out of their way to learn for that teacher. Children love teachers who really care for them. So therefore, positive relationships between teachers and students are vital. And as we all know, we've hated certain subjects when we were in school, partly because the teacher just didn't teach well. The teacher was very judgmental. The teacher was very difficult to work with, etc. Whereas certain teachers who really inspired us were teachers who actually truly cared for us, spent a listening ear with us, and so on. Thirdly, teachers' own social-emotional capacities have direct link to their ability to develop students' affective capacities, which means that if teachers have social-emotional learning, social-emotional capacities, then they can develop SEL, social-emotional capacities in children. We can't be talking about social-emotional learning of children if teachers' own social-emotional learning has never been considered, not through their own schooling years, not through their college years, not when in their adulthood, whether they're in their parental home or in their marital home or in their own home, it doesn't matter. But the point is that if teachers have not been cared for, it's very difficult for them to be able to develop the same capacities in children. And on top of the context that I've set, there is, of course, the impact of the pandemic on teachers and students. I know, for instance, Professor Shekhar Sheshadri, formerly, he's just retired from NIMHANS, Professor of Psychiatry. He says mental health is a ticking bomb in India. And I think it's a caution that we have to take heed of. We need to be, we shouldn't be just sort of brushing it aside. Koi baat nahi, it'll be okay. If it happens, it happens. We have to be considerate of the fact that mental illness is a big concern. 20% of India, and that's a huge population. If you're saying in a country of 1.2, 1.3 billion, 20% of the population, and that too, it's a youthful population. If we're going to be spending the best years of our lives, children and young people are going to be spending the best years of their life feeling depressed, it is such a waste of human capital and human capacity. 56 million people suffer from depression already. That's a large number. That is a big number. And it's such a wasteful, thing. It is a disease. And we have to take, it's not their fault, but we need to recognize that if we begin young, if we develop and nurture a sense of well-being right through their schooling years and college years, these young people will have the capacity to cope with their own mental ups and downs, and therefore not fall into depression. And 38 million Indians suffer from anxiety disorders. And this is data from WHO. And this is recent data from last year. So we have to take cognizance. It isn't something doctors or mental health specialists and psychiatrists to take into consideration.
Anybody who's working in the space of education and working with young people and children need to take into consideration, and we need to have the capacity to be able to handle these situations so that we don't allow children and young people to fall into mental illness or depression. So that's sort of the context in terms of the pandemic issue, because the pandemic has actually accelerated all these issues. So now coming to TTF's two-pronged approach for all schools. One is Jenny Mosley's whole school quality circle time, an ecosystemic model. And I'll explain to you why we call it an ecosystemic model, because we call it ecosystemic because it is for everybody. It's not just for children. It's not just for teachers. Everybody has to be cognizant of how to work with children. Everybody, meaning every adult in the school. And of course, ISELF, the Indian Social-Emotional Learning Framework. And how do these two things juxtapose, QCT as well as ISELF? So understanding the whole school quality circle time model, the basic ethos of quality circle time is respect and equality. Easy enough to say, it's simple. In other words, we are respectful of each other in the classroom, the teacher being respectful of the child and the class, every child in the class, the children learning to be respectful of each other, and of course the teacher. A lot of times we expect respect to be just one way, teachers to be respectful towards students. But here we are saying that adults, the teacher has to be respectful of the child, and only then can the child learn to be respectful of everybody else. So one is that, the other is equality, that everybody sitting in a circle, because quality circle time is just about people sitting in a circle. Of course, not just people sitting in a circle, people sitting in a circle and using a very structured approach of discussion, dialogue, sharing, exchanging ideas, problem solving, listening to each other, thinking of ways to support each other, and so on. So, and we use 5 skills, and we say thinking, looking, listening, speaking, and concentrating. So it is within this ethos of respect and equality. But it's very difficult. We work for many years, we work for 20 years with teachers. And while teachers understand it, it's so difficult for them to shed old habits and to shed the demeanor of being judgmental towards children. So, but it's something that works, and we have, we've done it for many, many years. And the reason why we call it the ecosystemic model, because it involves every stakeholder in the school, which means the head teacher, the teachers, the parents, and of course the children. This is part of the ecosystemic model. I'm just showing you part because this is not a training in quality circle time. I'm just sort of acquainting you with how this can be linked to whole child development and teacher well-being. So if you look at this model, this is just part of the model. It's a simple model. And I mentioned 3 listening systems, and a caring school having 3 listening systems. The 3 listening systems are group listening, which is at the center. So everybody sits in a circle and listens to each other, taking turns to listen to each other in a very structured way. And it's not just talk, there are games, there are fun activities, and there's serious discussion and problem solving also. And we do it through 5 stages, which we call meeting up, warming up, opening up, cheering up, and calming down. That is one listening system. A second listening system could be one-to-one listening, which is confidential listening or bubble time. We can call it talk time, bubble time, or one-to-one listening. So I can have a quiet conversation with a student, or a teacher can have a quiet conversation with another teacher about some matter that she's concerned about or he's concerned about. That's one-to-one listening. And the other is, of course, non-verbal listening, where there is a mechanism through which people can express their thoughts and feelings without verbalizing it, without actually speaking it. So it could be in the form of a suggestion box. So in other words, every class has a think box, or a think, instead of think book, we can call it think box, where children can put down anything that's upset them in the course of a day or a week. They can put their little note in the think box. If they don't want to speak it out, that's one way of, it's up to the teacher to ensure that she or he looks into the think box to see
who are the people who are expressing their thoughts and feelings. Now, of course, there could be cases of children who are not able to write. And in that case, there are other ways in which we can do this non-verbal listening, where the teacher makes a provision for children to hang their feelings. So you could say, if you're feeling sad, hang this feeling or tick this particular figure. It could be a sad figure. If you're feeling happy, tick this. If you're feeling sort of neither happy nor sad, tick this. That sort of thing. That's another way in which we're listening. We're keeping sort of placing a finger on the pulse of the class. We're getting a sense of how is the class feeling? What's the mood of the class? Now, as you can see, right at the head of this model is self-esteem and morale of adults. The adults, the most significant adults in the school are the teachers. They're the most important adults as far as children are concerned. And unless the model exists because of self-esteem and morale of adults, if teachers don't feel good about themselves, then there's no point of having these 3 listening systems, or the golden rules, which I'm going to be talking about too shortly. So the head of the model is the self-esteem and morale of adults. The backbone of the model are the golden rules. I just talk about that. And therefore, we encourage, when we train teachers, we encourage teachers to make sure they learn how to look after themselves, how to nurture themselves, how to engage in self-care, so that they're constantly feeling replenished. They don't feel completely drained of energy, because a lot of times teachers feel completely exhausted and drained of energy when they work with children. Teaching has been seen to be one of the most stressful jobs in the world, apart from maybe fire, fire department officials and maybe doctors working in emergency. Teaching is a very stressful job, and a lot of times we don't have credence to the fact that teaching is a very psychologically demanding job. It is physically demanding, psychologically and emotionally demanding also. So I was talking about the golden rules, which forms the backbone of the model. The golden rules are simple. They're basically moral values. We are gentle, we do not hurt anybody. We are kind and helpful, we do not hurt anybody's feelings. We listen to people, we do not interrupt. We're honest, we do not cover up the truth. We work hard, we do not waste our or other people's time. We look after property, we do not damage or waste things. Now, it's very important that we follow these rules when we're talking about listening to people. We listen to people and be abrupt with children or fellow adults, and be very, very dismissive of people. It's very important for us when we listen to people, when we need to be gentle, we need to be kind, we need to be honest, we need to demonstrate we are working hard. We can't tell children to work hard unless we ourselves show that we work hard on behalf of the children as teachers. So this is important because this is what creates that authenticity of the model. Otherwise, the model is just a little token ornamentation of just children sitting in a circle, playing some games, having discussions. It is founded and based on this principle of gentleness, kindness, honesty, hard work, taking care of property, taking care of oneself, being respectful of each other, etc. So how do we look at self-esteem and morale of adults in terms of teacher well-being? We believe teacher well-being through, you can foster teacher well-being and therefore self-esteem and morale of adults through what Jenny Moseley, who's the creator of the model, calls visiting the 5 wells. And when we talk about visiting the 5 wells, wells are in Hindi, we would call them kuan. Now, what does a well contain? Well contains water. So water is a metaphor for life. So in a way, when we talk about visiting the 5 wells, it's about how do we replenish and quench our thirst in 5 facets of our life. And to keep it simple, you can remember it as spice. There is the spiritual well,
You have to be able to replenish your spiritual side. You need to replenish your physical side. You need to feel physically well. You need to feel physically fit. There is the intellectual side, or the mental, the cognitive aspect of your life. And then there is the creative side. And of course, finally, the emotional well. So it's easy to remember SPICE. So spiritual, physical, intellectual, creative, and emotional. And at Teacher Foundation, we've actually created a booklet of 50 activities, and you can actually create your own other activities too, in order to, following these five wells, in how can teachers actually foster and nurture each of these wells within them. It's about, because we're constantly giving of ourselves, giving of our energy, giving of our ideas and so on. And it's so easy to feel exhausted. And unless we purposefully replenish ourselves and feed our wells, feed our five wells, we will not be able to look after ourselves. Therefore, teacher well-being can be linked, visiting the five wells can be linked to teacher well-being. To quote Jenny, she says, deep down, why should we look at teacher well-being? We owe it to the children in our care to ensure our own energy levels are topped up and that we are feeling very positive. It's the whole thing about is when you step into a school as a teacher, you need to bring in good mood. It can't be that you walk in an irritated way, you've had a fight at home, and then you can't drop that fight, and then you start yelling at children and so on. It's definitely going to be making a teacher's stress levels high. So it's very important for us to be purposefully positive when we walk into school, walk into any workplace. It's humbling to remember that energy levels, stress, self-esteem, and self-confidence are inextricably linked with our ability to enjoy life and be positive, creative, and efficient. And these are qualities so crucial while we're working with young people. So that was about quality circle time and how it's linked to well-being. And then I just want to bring in our work in SEL space. Our work in SEL began with quality circle time and our work with teachers and looking at their teacher well-being. And we realized that teachers didn't have a sort of a resource through which they can look at nurturing social emotional learning capacities in children, which is how we embarked on research, which eventually resulted in the Indian Social Emotional Learning Framework. The Indian Social Emotional Learning Framework looks at the 5 SEL competencies that are used in other frameworks also, but we did it as an empirical research across 5 years from 2012 to 2017. And when we started in 2012, when we were talking to teachers across the country, talking to head teachers, both government and private schools, urban and rural schools, north, south, east, west and northeast of India, many of them say, what is social emotional learning? Nobody had heard of social emotional learning. And it's such a different environment now when everybody talks about SEL. Now, ISELF is a vital resource for social emotional learning standards and age-banded learning outcomes, which can be used by teachers across India. And I say, and that's why it took us so long, because we had to make sure that these learning outcomes are age-banded, because you can't expect a social emotional learning capacity in a 7-year-old, which you would expect in a 16-year-old. Therefore, we had to make sure that it was age-banded. This is a bird's eye view of ISELF. There are 5 competencies. Each competency has 2 to 3 learning standards, and each learning standard has learning outcomes. It's the learning outcomes that are age-banded. So a learning outcome for 6 to 8 years would be very different from 6 as compared to 16 to 18 years. So there are 5 age bands: 6 to 8 years, 9, 10 years, 11 to 13, 14, 15, and 16 to 18. I'm just going to give you a quick glimpse and then I'm going to stop. So I'm going to give you a quick glimpse of one SEL competency and one learning standard. So this is the SEL, the first SEL competency of self-awareness. And there's a definition and explanation of what we mean by self-awareness. This is the first. There are 2 learning standards in this competency. This is one learning standard. And you can see how the learning outcomes are across 3 age bands.
In the first age band, it's a very simple learning competence, a learning outcome. Accurately label emotions and recognize how they're linked to behavior. Whereas if you look at the 11 to 13 years, it is recognized that one's emotional responses can be distinct from others in the same situation. And if you look at further down to 16 to 18 years, it's a lot more complex. Examine ways of dealing with conflicting thoughts and emotions. So that's more appropriate for 16 to 18-year-olds compared to the first one of just being able to label emotions for 6 to 8 years. So this is how we have actually worked it out. And by the way, this is a downloadable resource. And Swapnil, you can actually put the link on chat so that in case they want to, anybody would like to look at it or download it. And last year, Harvard University's EASL labs also mapped iSelf with all various other life skills and SEL frameworks. And actually, iSelf was found to have in terms of depth of focus, it has the most amount of depth. So we were surprised to hear that too. Anyway, that's just a little bit of information. So how do QCT and iSelf fit together? We believe that when we're looking at listening systems through QCT, each QCT session, which should be normally 45 minutes, so 40 to 45 minutes, can be carefully designed using one age-banded learning outcome of a specific SEL competency. So you can decide if I'm just going back here. Yeah, so you can say, okay, if I'm working with a 14, 15-year-old, I can say, okay, this is the learning outcome. I'm going to determine how, analyze how emotions affect decisions and responsible behavior. So I can focus on that and design a QCT lesson plan, keeping that in mind. So similarly for 6 to 8-year-olds or 9, 10-year-olds and so on. So how does SEL fit with well-being? When children feel better, when children feel well, they will respond and learn better. It's as simple as that. We cannot expect children to sit quiet and listen and learn in a classroom if they don't feel well. And in order to feel well, they need to have their social emotional capacities nurtured. And recently, last year, the OECD had brought out their first report on assessment of social emotional learning in a report which is called Beyond Academic Learning. And they very categorically say social and emotional skills are strongly related to well-being. So we can't expect student well-being unless we nurture their social emotional skills. And that's it. Thank you. Thank you, Maya. Thank you for sharing such an insightful presentation with us. Thank you for making us understand that how the well-being of teacher is so directly connected with the well-being of a student and their whole child development. What are the enabling factors and what are the conducive ecosystem level interventions we can do in the schools to facilitate that culture where teachers are actually able to feel that yes, they are moving into the journey of well-being, as well as the two strategies which you shared, which is whole child quality circle and iSelf, of course, to facilitate that culture and ecosystem for teachers, so that in the end we can ensure that our children, our students are in that journey of well-being through social emotional learning. It was really, really wonderful to listen and in such a depth. I hope when we are having a question answer round, we can listen more and hear more from your side based on your experiences and challenges which you shared, which you must have faced while driving these changes. Because as you were saying that you were one of the initial people who was driving these initiatives. So I hope that platform gives us that scope. But absolutely. Yeah. Thank you so much. So now I will request Ms. Nasreen and Dr. Prerna from ICRW to lead the session and share the presentation with the panel. Thank you. Thank you so much. Thank you, Parul. Thank you, Parul. Apologies if you're not able to, hear me clearly. There's a bit of an issue with my throat, so apologies right at the beginning. I'm going to share my screen and also make sure that we all are able to see. Are you able to see my screen?
Yes, yes. Yes, Prerna, yes, we can. Thank you very much. सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. Thank you for the invite today. प्रोजेक्ट संपूर्णा और झारखंड हमारे लिए नया नहीं है, तो इसलिए जो आज हम बातचीत करेंगे वो झारखंड से ही जो हमारी निकली हुई लर्निंग्स हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे. झारखंड में ICRW का काम पिछले 10 साल से ज्यादा से चल रहा है इस समय में. Thank you Maya for setting the stage. Maya ने socio-emotional learning की बात करी, teachers engagement की बात करी, and ये सारी बातें they make a very beautiful segue for the sharing that we will be presenting today. Thank you for that. So like I said, ICRW पिछले 10 साल से झारखंड में काम कर रहा है, पर ICRW की शुरुआत असल में 1975 में हुई थी, 1970 के दशक में. हमने इनफैक्ट पिछले साल हमने अपने 45 इयर्स सेलिब्रेट किए, और इंडिया के अंदर ICRW पिछले 22 साल से काम कर रहा है. जो हमारा बेसिक मिशन है वो है to promote gender equity, social inclusion and shared prosperity, and this is what we believe in, this is what we work towards. What do we really do? We work with NGO partners, we work with governments, we work with private sector players, we work across the gamut of organizations, one, to really generate insights and evidence, which then informs the strategy, informs the program design, and helps informs the policy as well. And then we also, along with our partners, implement some of that and try and integrate it within the existing systems. तो ICRW की जो एक कमिटमेंट है वो ये है कि हम जो भी काम करें उसे हम सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें, ना कि एक सेपरेट पैरेलल सिस्टम तैयार करें. तो इस तरह से हम काम करते हैं, और ICRW में ज्यादातर जो लोग काम करते हैं वो सोशल साइंटिस्ट हैं और सभी मल्टीडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड से आते हैं. तो ये ब्रीफली अबाउट ICRW. आप में से काफी जो लोग आज जुड़े हुए हैं उनसे कभी ना कभी ICRW का संपर्क रहा है. हम सब ऑलमोस्ट एक साथ हम लोगों ने आप में से काफी सारे साथियों के साथ काम किया है. तो आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि थोड़ा सा जो हमने जिस तरह से हमने आपके साथ काम किया है या शेयर किया है, आज हम शायद उसे और ज्यादा कंसोलिडेट कर पाए. जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड के अंदर हम लोग लगभग 10 साल के ऊपर से काम कर रहे हैं, और पूरा जो झारखंड में हमारा काम है उसका फोकस एडोलेसेंट रहा है. तो जब हम होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि जो हमारे किशोर हैं उनकी जरूरतें क्या हैं, और कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो वो फेस करते हैं. तो जब हम बैरियर्स की बात करते हैं और चुनौतियों की बात करते हैं, खासकर के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें ये बार बार रियलाइज होता है कि एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे जेंडर नॉर्म्स हैं वो बहुत रिजिड हैं और डिस्क्रिमिनेटरी हैं. और ये सिर्फ झारखंड के लिए बात नहीं, ये शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए बात सही है, पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात हमें पूरी तरह से देखने को मिलती है. झारखंड में जो एक खास मुद्दा देखने को मिलता है वो है अर्ली फोर्स एंड चाइल्ड मैरिज का, और हम बार बार देखते हैं कि अभी भी कुछ इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स मैरिज देखी जाती है. हालांकि अगर हम डेटा देखें तो डेटा हमें बताता है कि जो पहले शादियां 13 साल 14 साल में होती थी अब नहीं रही हैं, अब वो शिफ्ट हो गई हैं, पर अभी भी वो लीगल एजेड मैरिज कम में शादियां हो रही हैं. अब शायद लड़की की शादी 16 या 17 में होती है जब वो चाहे 10th पास कर लेती है या 9th पास कर लेती है, पर अभी भी वो अर्ली मैरिजेस हो रही हैं और फोकस मैरिज पे ही रहता है. जो प्रोग्राम और एक्सेस है लड़कियों को, खास करके अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स की, तो डेटा तो हमें ये बताता है कि स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स में स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है वो बहुत बढ़ गया है और लड़कियों का भी एनरोलमेंट बहुत हाई है. But the unfortunate part is that while the enrollment is really high, time and again we've come to realize that the attendance always remains very, very low, which often we do not discuss
in as great a length as it is required. Because the whole idea of education is not just in exams, but also a space which actually supports this young person, whether it's a boy or a girl, to be able to strive to achieve their own potential. और वो हम देखते हैं नहीं हो पाता. वायलेंस, पॉवर्टी, ये तो बहुत दूर मुद्दे हैं. और वायलेंस जब हम समझते हैं तो हमारी समझ वायलेंस की सिर्फ फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस तक सीमित नहीं है. हमारी समझ उसको वर्बल वायलेंस के और स्कूल के अंदर जिस तरह से, चाहे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह की जबरदस्ती और काफी जो स्ट्रिक्ट तरीके होते हैं पढ़ाने के, तो स्कूल के अंदर भी जो वायलेंस है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. और जैसा मैंने कहा कि चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, कहीं ना कहीं जो है हमारा, जो एडोलेसेंस है, जो किशोर किशोरियां हैं, उनका जो एक्सेस है इन सब को, वो एक तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं. और खास करके जो हमारी किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, तो चुनौतियां कहीं और ज्यादा गहरी हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे जो बैरियर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. तो ये जब हमारी समझ बनी, तो उसके बाद हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने कहा कि अगर इतनी सारी चुनौतियां हैं और अलग अलग स्तर भी. I'm really sorry to disturb you. I was wondering if maybe you can switch off your video, because your voice is breaking very slightly a bit when you're speaking. Oh, sure, I can do that. Yeah, Not a problem. It might be bandwidth, so I think once you switch off, that might help. Let me just do that. Thank you. And let me know if this is more helpful. This is, yeah, much helpful. Thank you. Great, thank you. अगर इतनी सारी चुनौतियां हैं और अलग अलग स्तर की चुनौतियां हैं और इतने सारे बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन बैरियर्स को क्या हम सिर्फ उन एडोलेसेंस के साथ काम करके वाकई में एड्रेस कर पाएंगे? जब हमने इस पे बहुत और काम किया और चर्चाएं करी और काफी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात करी, तो हमें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि जो बहुत जरूरी चीज तो ये है कि ना तो सिर्फ हम लड़के लड़कियों के इंडिविजुअल स्तर पर काम करें, पर हम जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर हम काम करें और उनके साथ काम करें. So essentially we are talking about a multi-level approach, and within each level we are talking about multiple stakeholders as well. So we are essentially saying while you work with an individual girl or a boy and make sure that they receive all the wherewithal, whether it's information, whether it's skills, whether it's the support networks, to also ensure that we work with their families, their schools, their communities. We also work with the systems and institutions and influence the policies. And at a larger level, we also work shifting the norm. And across these levels, so when we're talking about multiple levels and multiple stakeholders, we are also essentially talking about shifting the power balance. Now, interestingly, each area, each stakeholder and each level, we need to recognize that what kind of power does that stakeholder has vis-a-vis the others. And therefore, we've constantly realized that if we're talking about a gender transformative program, the idea is to shift that power. The idea is to ensure that the change occurs at the level of the individual. The change occurs in the relationships of those individuals and groups and communities, and also institutions and policies. So everyone needs to change, and the onus of change cannot be thrown on the individual. Like I said, we have had a partnership with the JPC for over a decade now. And during that, we have obviously been working very closely through our project. But beyond our project, we've been able to contribute to the curriculum review, the curriculum content and textbooks. We have also been a resource agency for
really, building capacity of the master trainers on gender issues. We have trained over 1,000 teachers across 7 districts. I know that doesn't sound like a big number, but I think the trainings that we're talking about, and as we go along, you will realize are far more intensive and are aimed at building perspectives and shifting. We've also been supporting ABC in DigiSat. So we developed digital learning content and capacitating district level officials. And this was especially in context of the pandemic when the Shishu Bhaji was being made. Also, we have been instrumental in ensuring that the SMCs have been resumed and reconstituted across 270 schools at the community level. And, the learning we've had also from several of our school-based interventions over this decade, we have, based on that, we have developed the framework for JCRT on gender responsive education. In fact, we have also just very recently developed the position paper on gender responsive education for JE. So this is briefly about ICRW's work in Jharkhand, and a lot of you would be familiar with it. 3 programs that today will use as examples to also showcase what works and what doesn't. Are these 3 programs that, like I said, some of you may be familiar with. Then, हमारा एक flagship program रहा है Gender Equity in Schools, which focused on reducing gender discrimination and violence among boys and girls in schools. And this was essentially implemented with the adolescents classes. We have another program called UMANG, which focuses on reducing child marriage, building agency and voice of adolescent girls. And there the focus remains from class 6 girls of class 6 to 12. And then the third program that we will also kind of use as an example to showcase what works is Planet Girls. Planet Girls focused on building agency and employability of adolescents and focused largely on school to work transition. Therefore, we worked with girls in 12. I'm going to invite my colleague Nasreen to first take you through a couple of these programs, GEMS and UMANG, and then I'll see you after that again. Nasreen, over to you. थैंक यू प्रेरणा। तो प्रेरणा ने अभी बात की जेम्स प्रोग्राम की, तो जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल। तो जेम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम में हम हमारे जो फील्ड फैसिलिटेटर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, जिसमें हम अलग अलग इश्यूज पे जेंडर, आइडेंटिटी, पावर, पेट्रियार्की, वायलेंस, एस्पिरेशन, चाइल्ड राइट्स, बहुत सारे इश्यूज पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और उसके साथ हम टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, सेम इश्यूज पे टीचर्स के साथ में भी उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और साथ ही साथ जो हमारे स्कूल्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे ये कहें कि SMC है और बाल संसद है, उनके साथ भी हमारी बहुत कंटिन्यू जो उनके साथ में बातचीत करना, उनका ओरिएंटेशन करना, उसमें भी जेम्स प्रोग्राम के तहत की जाती है। और जो क्लासरूम सेशन है, जो बच्चों के साथ में एडोलेसेंट जो गर्ल्स एंड बॉयज है, उनके साथ में हमारे जो क्लासरूम सेशन जिसको हम सामूहिक शिक्षा सत्र है, वो एडोलेसेंट के साथ में टीचर्स उनको लेते हैं और हमारे फैसिलिटेटर जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही जो स्कूल्स में कैंपेन है, जो अलग अलग इश्यूज पे कैंपेन स्कूलों में चलाए जाते हैं, बहुत अलग अलग सभाएं होती हैं, उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट कंट्रीब्यूशन रहता है। और एक और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो है कि ये सेफ्टी ऑडिट की बात है, जो हम स्कूल में बच्चे मिलकर के करेंगे अपने सेफ्टी को लेकर के, प्लेग्राउंड की सेफ्टी है, टॉयलेट को लेकर के, वायलेंस को लेकर के। तो ये पूरा प्रोग्राम इन सारे बातों को लेकर के यहाँ पे जो जेम्स कार्यक्रम है इस पे आधारित है। और इसमें हमारे साथ
पिछला जो हमारा कार्यक्रम रांची और खूंटी में चला था, वो हमारे पार्टनर्स सीनियर लीड्स के साथ ये कार्यक्रम को चलाया गया था। और अभी जामताड़ा और गुड्डा में बदलाव फाउंडेशन एंड साथी 2 संस्थाओं ने मिलकर के हमारे साथ में पार्टनर्स जो हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रेरणा नेक्स्ट। तो कुछ लर्निंग्स जेम्स प्रोग्राम से कुछ लर्निंग्स जो मिली है हमें, वो अभी यहाँ पे हम आपके साथ बात करना चाहेंगे कि टीचर्स के साथ जब जेंडर पर्सपेक्टिव बिल्डिंग या उनकी ट्रेनिंग या वर्कशॉप किया गया, तो उसका ये रिजल्ट रहा कि टीचर्स जो स्कूल में जेंडर इक्विटी की जो बात करना है वो शुरू किए, ये देखा गया है। साथ ही अगर देखेंगे कि जो जेम्स के सेशन में जो एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक कुछ नेटवर्क इश्यूज लगा मुझे। तो जेम्स के अंदर जो एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेट किए हैं, सेशन में भाग लिए हैं, उनके अंदर में कुछ पॉजिटिव जेंडर समानता के दृष्टिकोण के बदलाव को देखा गया। साथ ही अगर हम देखें तो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है और जो हमारे पीयर बेस्ड वायलेंस होते थे, उसमें कमी देखी गई, जो हमारे बेस लाइन के डेटा में था और एंड लाइन के डेटा को जब कंपेयर किया गया तो उसमें ये देखा गया। और जो जेंडर ऑफ वायलेंस के जो मुद्दे थे, जो फैमिली और दोस्तों के साथ ये चर्चाएं शुरू होने लगी, ये भी देखा गया। साथ ही जो बच्चों की जो वायलेंस में थी वो समझ काफी बढ़ी और उनके प्रति एक सकारात्मक सोच भी आना शुरू हो गया। ये भी लर्निंग्स जेम्स प्रोग्राम में दिखी। और एक जो चर्चाएं बोले, ये कहे कि जो वायलेंस के जो मुद्दे थे, जो बहुत ही साइलेंट होते थे, जिसपे कभी बात नहीं होती थी, उस पे भी चर्चाएं होनी शुरू हुई। तो ये लर्निंग्स जो है जेम्स प्रोग्राम में देखने को मिला है। प्रेरणा, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो। नहीं, थैंक यू, प्लीज कैरी ऑन नसरीन। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े प्रेरणा। कुछ दूसरा प्रोग्राम प्रेरणा ने जो शेयर किया था कि उमंग प्रोग्राम भी, ये भी झारखंड में ही हमारे संथाल रीजन में है, जिसमें हम एडोलेसेंट गर्ल्स के एम्पावरिंग की बात कर रहे हैं और एंडिंग चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से अगर देखेंगे तो इकोलॉजिकल मॉडल आधारित है, जिसमें हमारी फोकस जो है वो एडोलेसेंट है और 10 to 18 एज ग्रुप की एडोलेसेंट है, जिसमें स्कूल गोइंग भी है और ड्रॉप आउट गर्ल्स भी हैं, जिनके साथ हम स्कूल्स में भी और कम्युनिटी में भी अलग अलग तरीके से सेशन और बातचीत करते हैं। स्पोर्ट्स के द्वारा जो हमारे एडोलेसेंट ड्रॉप आउट है, जो कम्युनिटी में है, उनके साथ हम स्पोर्ट्स स्पेशली फुटबॉल फोकस होकर के उनके साथ में बातचीत करते हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फैमिली के साथ में भी बात करते हैं, जो हमारे बहुत ही वनरेबल गर्ल्स है, जैसे कहेंगे कि जो एडोलेसेंट की पढ़ाई छूट गई है, ड्रॉप आउट हो गई है, साथ ही साथ जो एडोलेसेंट ड्रॉप आउट हो रही हैं, उनके शादी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो उनके साथ में कंटिन्यू बातचीत होती है और अभी रिसेंट फरवरी तक 400 एडोलेसेंट के साथ में बातचीत हुई, पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई और 400 एडोलेसेंट का स्कूल में एडमिशन भी क्लास 10th एंड 9th में कराया गया है। साथ ही साथ हम इकोलॉजिकल मॉडल में अगर देखें तो हम कम्युनिटी के साथ भी बहुत फोकस होकर के बातचीत करते हैं, जिसमें हमारे उनके फादर, उनके ब्रदर मतलब बॉयज भी हैं, उनके साथ हमारा एक मेल एंगेजमेंट का एक पूरा एक करिकुलम है, जिसके साथ हमारी बातचीत होती है और ये काफी इंगेजिंग है। और साथ ही हम उन वुमेन कलेक्टिव जो एसएचजी ग्रुप है, उनके साथ में भी बातचीत होती है। इसमें हमारे सपोर्ट पीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन हमें इसमें
सपोर्ट करती हैं। और जो हमारे पीआरआई मेंबर है, पंचायत मेंबर है, उनके साथ में भी हम बातचीत करते हैं। और जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, जो बहुत ही ये कहेंगे कि उनको रीएक्टिवेट करके अभी स्ट्रेंथन किया गया है, और इन सारे मुद्दे पे बातचीत इसी प्लेटफॉर्म पर की जाती है। और जितने फ्रंटलाइन वर्कर है, जो आंगनबाड़ी वर्कर सब है, उनके साथ में भी काम किया जाता है। तो पूरा ये देखेंगे, पूरा ये कम्युनिटी में इन सारे प्लेटफॉर्म पे बातचीत की जाती है। और साथ ही साथ जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर देखें तो हम डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में एंड स्टेट पे हम तो है, यहाँ पे हम बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं, और ब्लॉक में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनके साथ में भी हम काम कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा इकोलॉजिकल मॉडल है, जिसको लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कुछ लर्निंग्स है जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो लर्निंग्स है यहाँ पे, कि टीचर्स के साथ जब हम यहाँ पे डिस्कशन में वो भाग ले रहे हैं, तो वो उनकी जो समझ बढ़ रही है, स्कूलों में वो सेशन के दौरान ये सेशन ले रहे हैं, और वो अपने सेशन को भी लीड लेकर के बच्चों तक लेकर के जा रहे हैं। और उनका जो सेशन है, जो सत्र होता है, जो करिकुलम जो बच्चों के साथ में क्लासेस में लिया जाता है, वो हम पूरे उनके जो प्लान है, सेशन प्लान है, उसमें डाला जाता है। और ये हमारे जो जेईपीसी है, उनके सहयोग से ये पूरे कार्यक्रम में और उनके पूरे सेशन प्लान में इसको डाला गया है। अगर हम देखें कि हमारा जो यहाँ पे एचएम के साथ में भी अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा महसूस किया गया है कि जब हम जेंडर इक्विटी पर स्कूल में काम कर रहे हैं, तो हेडमास्टर के साथ में भी उनका ओरिएंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। और वो उसके बाद काफी संवेदनशील होते हैं, और इस कार्यक्रम को वहां पर हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो हम लोगों ने एचएम के साथ में भी ओरिएंटेशन का कार्यक्रम जो है वो किया गया। साथ ही अगर देखेंगे कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड, अगर इस कोविड के संदर्भ में बात करेंगे, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है DG 7, जो जेईपीसी ने बच्चों की एकेडमिक पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया था, उसमें भी एक जो एफर्ट लगाया गया, और उसमें भी हम लोगों ने जो हमारा एक कॉमिक्स बुक है, उसको हम लोगों ने वॉइस ओवर करके वायलेंस, जेंडर, काम के बंटवारा, इन सारे मुद्दे पे उसमें भी जो कंटेंट है उनको प्रोवाइड किया गया। और जो बच्चे इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उनको अलग अलग तरीकों से हमारी जो पीयर मेंटर है फील्ड में, उनके सहयोग से इनको सपोर्ट किया गया। तो ये कुछ हमारे उमंग के जो है वो लर्निंग्स रहे हैं। थैंक यू नसरीन। जैसा नसरीन ने बताया कि हमारे जो ज्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं, और जैसा मैंने भी पहले कहा कि हम इकोसिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं that the onus of change cannot be on the girls and the boys, while they should be equipped with the information and the skill set to bring in that change. And when I'm talking about skill set, it's socio-emotional skills, so basically life skills. But we also recognize that everyone else needs to provide them a supportive and an enabling environment. Planet Girls जो एक हमारा कार्यक्रम और जिसका मैं एग्जांपल दूंगी आपको, वो भी बेसिकली फोकस था एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर। जैसा मैंने कहा, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन पे फोकस था, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि ज्यादातर बच्चियां डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कूल जाती हैं, वो ट्रांसलेट नहीं करता है उनका किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट या प्रोडक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। और इसकी सोच को रखते हुए, और काफी एक हमने स्टडी करी थी 2013 में, जहां हमने ये समझा था कि ये एक चीज है जो लड़कियां चाहती हैं करना, उसके बेसिस पे हमने ये कार्यक्रम तैयार किया था। इसमें भी आप जैसा देखेंगे कि while we use life skills as the basic content, we also recognize that life skills are not gender neutral.
life skills are gender irresponsive, absolutely. Most often they do not really account for the fact that girls are socialized differently, and therefore the way they look at life skills and the way they imbibe those life skills is very different. And one of my favorite examples is communication. जब लड़कियों को और लड़कों को communication पढ़ाया जाता है as a life skill, तो हम ये मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल है, पर हम ये भूल जाते हैं कि लड़कियों के सोशलाइजेशन में बार बार उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ओबिडिएंट होना चाहिए, उन्हें असर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरों का सुनना चाहिए। और जब लड़कों को बिल्कुल उसके उलट विपरीत बात सिखाई जाती है कि कैसे आप असर्ट करें और कैसे आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाए। तो इसलिए हमने जो किया वो ये कि हमने एक जेंडर इंटीग्रेटेड लाइफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम तैयार किया। तो जितने भी आपने अभी तक हमारे कार्यक्रम देखे, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो उमंग हो, चाहे प्लैनेट, सो हम लाइफ स्किल्स को एज अ टूल यूज करते हैं, बट उसमें हम जेंडर इंटीग्रेटेड लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं। इस प्रोग्राम में खास तौर से हमने जहां एक और लड़कियों के साथ काम किया, साथ ही जो उनके कक्षा में पढ़ने वाले बॉयज थे उनके साथ भी हमने जेम्स का जो हमारा करिकुलम था वो हमने चलाया। पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ हमने वर्कशॉप्स करी, विजिट्स करी, बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स किए और काफी सारे अडॉप्टेंट लेड कम्युनिटी कैंपेन्स किए। और पूरा जो मुद्दा था इस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली वो हमारा था कि कैसे लड़कियां एस्पायर कर पाए आगे पढ़ने के लिए और कैसे वो कंटिन्यू कर पाए और उसके लिए नेगोशिएट कर पाए अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ। ये जब हमने कार्यक्रम चलाया तो इसके बाद हमने पाया कि काफी इफेक्टिव रहा ये प्रोग्राम। और कुछ जो भी लर्निंग्स हमारी निकल कर आई वो हमें ये बताती है कि आई एम सॉरी फॉर सम रीजन माय सिस्टम इज स्टक। वो हमें बताती है कि इस कार्यक्रम में लड़कियों में हमने उनका ये पाया कि एक तो उनकी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हुई, दूसरा उनके जेंडर इक्विटेबल एटीट्यूड्स इम्प्रूव। और ये दोनों चीजें जब साथ में इम्प्रूव होती है, लड़कियां अपने लिए एस्पायर कर पाती हैं। एक एग्जाम्पल मैं सबको देती हूँ कि जो पहला हमारा सेशन था इस करिकुलम में, जो हमने क्लास 9 और क्लास 11 के साथ 2 साल तक चलाया, वो था मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी के ऊपर। बहुत ही छोटा सा 40 मिनट का एक सेशन था, पर जब हम 3 साल बाद भी उसके लिए क्वालिटेटिव स्टडी करने गए, वो एक सेशन था जो सारी लड़कियों को याद था। और उसके 2 कारण थे। एक तो ये कि मैं कौन हूँ कभी शायद उनसे पूछा ही नहीं गया था, तो इट वाज अ वेरी स्ट्राइकिंग क्वेश्चन फॉर them. And the second thing that they figured out with that session was that their identity is not alone linked to their fathers or their husbands, but they can build their own identity. This in itself is extremely empowering and revolutionary for them. The other key thing that we learned was कि parents के support और school का जो environment है, अगर वो positive होगा तो लड़कियां aspire भी कर पाएंगी और उनको अपनी ability में कि वो आगे career से संबंधित decisions ले सकती हैं, उसमें भी उनका belief बढ़ता। तीसरी important बात जो हमने पाई वो ये कि टीचर्स से जो सपोर्ट बच्चियां लेती हैं और जो परसेप्शन उनका अपने स्कूल के बारे में होता है वो भी उनकी करियर डिसीजन मेकिंग सेल्फ एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। And therefore we realize that school as an enabling environment, as a safe space, becomes very, very important. And I think this is exactly where what Maya was saying also comes into play, that how do you make sure that the teachers become a support system for the students themselves. And in this particular case, because we're talking about issues of gender and gender norms, which are very, very intrinsic to our psyche, it becomes all the more important that we work with teachers very closely. We also realize that mothers become very critical allies for adolescent girls. A lot of mothers want a better life for their daughters, but often what scares them is log kya kahenge, will she be okay, and some of those questions. Working with mothers could really help develop them as allies for these boys and girls in the community as well. I'm going to close this session by just briefly talking about what works. हमने
3 अलग-अलग कार्यक्रमों की बात करी और तीनों जो प्रोग्राम्स हैं उनका बेसिक मुद्दा जेंडर इक्विटी को लेकर है। तो हमने जो लर्निंग्स हैं इन तीनों प्रोग्राम से उनको इस एक स्लाइड में कंसोलिडेट और समेटने की कोशिश करी है। एक जो चीज हमें बहुत क्लियरली समझ में आती है वो ये है कि जो जेंडर एटीट्यूड्स होते हैं वो बहुत अर्ली फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े होने के बाद ही समझते हैं कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और लड़कों को क्या करना चाहिए। Gender attitudes form very, very early in life, and therefore there is a need to start early. While there is a need to start early, that does not mean that we stop at that point. There is a need for continuous engagement, and therefore, what we have learned and what we are now doing is age appropriate content from class 6 to 12 to make sure that every step there is something for that adolescent to learn, whether it's a girl or it's a boy, to learn in terms of how to have more gender equitable attitude and how to really use it in life. Gender is something even we all struggle with on a day-to-day basis, and therefore continuous engagement is what provides them the support to be able to shift and negotiate with the systems around. The other key thing, like I said, I gave an example of the session, who am I, मैं कौन हूँ. जो बहुत मुख्य बात निकल कर आती है बार बार वो जब तक आप कंटेंट को उनके स्वयं के जीवन से जोड़ेंगे नहीं, सेल्फ से जोड़ेंगे नहीं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी अनुभूतियों से, अनुभव से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो जो इमोशन है और वो जो समझ है डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी की वो बहुत ही तौर पर रह जाती है. It doesn't really go deep inside, and it doesn't really bring in the change that we are aiming to. The third thing that we also recognize is that, and this is very critical to all the curriculum that we develop, is that irrespective of who the stakeholder is, there is a need to build an understanding and perspective on gender, power, patriarchy, how it operates, how it impacts our day-to-day life. Often people think of it from a perspective of women, that women need to understand it, that girls need to understand it. But it's equally important to work with men and boys on gender, power, patriarchy to help them understand how it dehumanizes, how it takes away a lot. While it gives them a whole lot of privileges, it also takes away some very core things from them as well. And that is at the core of what we do as ICRW, building this perspective, building this understanding, whether it's for the students, adolescents, family, teachers, the school, it's heads of schools, it's the administration. It's a like I had earlier spoken about the gender transformative approach, we talk about, and we just don't talk about, but we also believe and implement what is called a multi-layered approach with multiple stakeholders, which intentionally works to shift the power imbalances. जब हम जेम्स की बात करते हैं या जब हम मंग की बात करते हैं या जब हम प्लैनेट की बात करते हैं, जो मुख्य चेंज हमने देखा वो ये कि लड़कियां उठ के अपने टीचर से सवाल पूछने लगे. जब टीचर कोई हिंसा करता है तो उनसे कहते हैं कि ये हिंसा है, उसे वो कॉल आउट करते हैं और वो खुद भी समझते हैं कि खुद कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं. तो पैनिक गर्ल्स में फॉर इंस्टेंस हमने देखा स्कूल, जो सेफ स्पेस की हमने बात करी, स्कूल एज अ सेफ स्पेस, वो इसलिए सेफ स्पेस बना झारखंड में क्योंकि अब वो लड़कियां जिन्हें सेग्रीगेट किया जाता था लड़कों से और कहा जाता था कि आप बात मत करिए, जब उनके टीचर्स ने कहा कि आप इनसे बात मत करिए लड़कों से, उन्होंने खड़े होकर उसे, उन्होंने कहा क्यों नहीं बात करें, हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि आप हमें उसके लिए रोक रहे हैं. Teachers have also started supporting them. So that's the kind of shift of power we are talking about. The last but the very, very point, and this is never, last but not the least for sure, this actually runs through our entire work, is generating evidence. And to just generate evidence to inform your programs and of course to design those programs, but this is a continuous process. So you generate evidence, you generate insights from field,
continuously learning and iterating, learning what is working, what is not working. Often in programs, we look at outcomes as the key thing, where our entire focus is, are we achieving our outcomes? Yes, outcomes are important, but how are we achieving those outcomes? Are our processes disempowering some of the stakeholders? Are our processes really, in true sense, gender transformative? Are our processes really yielding the results that we are aiming to? So it's not just about the end, but it's also about the kind of means that, and therefore evidence becomes absolutely critical throughout the process of the project or the program that you're running, for not just informing, but also course corrections. Thank you very much for a very patient hearing. आपके जो भी सवाल होंगे, we'll be happy to take those. And Parul, back to you. Thank you so much, Dr. Prerna. Thank you, Nasreen, for sharing such insightful a journey of your organization in terms of learning of very three key programs which you mentioned, GEMS, UMANG, and Planet Girls. I also really, it was very insightful for me to understand that when you were talking about the interventions and strategies, that how you would like to include and bring out gender perspective, it was a very ecosystem based approach. It was just not for the teachers or just not for the girls only. It include all these stakeholders like community, parents, teachers, and boys and girls, etc. And thank you for highlighting that how because boys and girls are taught differently, that's why the initiatives which you are thinking to bring in the schools or for their development, there has to be a slight consideration on there needs to be a bit different or customization with regards to considering their conditioning the way they have been conditioned. And yes, would really like to appreciate the way you were able to consolidate everything in the end of the presentation, how evidence creates a very important role to understand that on-time course correction as well as best practice data collection can also happen so that it can be scaled on time. Thank you so much, both of you. We'll take a 1 minute pause only to have a break where all of our participants can think of key questions which we can start asking from our panelists. And please, let's open the house for everyone, and people who would like to ask a question, but considering the ongoing question answer round is going on, please share your questions on chat so that we can take them up one by one for the panelists. Looking forward to this round. We'll just take a one minute pause and come back with key questions for our panelists to understand more of their experiences, of their challenges, or of what their initiatives have been so far in their experience. Thank you. Welcome back, everyone. I think our 1 minute is over for thinking what questions or what thought we would like to share in this discussion. I think I can start by asking one questions from Maya, and I think by then when she's responding, we can just share more and more queries from us. Maya, in your presentation, you mentioned that how critical it is. One aspect how critical it is to bring out the positive relationship between teacher and student.
I would like to know, first of all, on the level of experience, that how that journey has been. Why? Because when we are talking about making or creating a conducive culture for teacher to have the teacher well-being aspect, but we also know that they have been conditioned in a certain way. It has been so long for them that they maybe not that appreciative or not able to acknowledge their emotions, or what are the key things they need to take care of themselves, which can ensure the well-beingness internally. And we know the student are in a very younger stage, so your I self also manifested that the age group means the different complexity. So I wanted to know, when you were trying to bridge that positive relationship between teacher and student, how as an organization or as an individual you took care of both these differences of back conditioning or very nascent stage of journey where they're figuring it out, okay, this is me and this is who I am as a student, and the person who has been conditioned, who has set notions, who have like strong structured rules and regulation for themselves, how that bridge was actually built in bringing positive relation with both of them. Yeah, I think that's a very key and problematic, difficult, challenging question also, because what happens is that some teachers pick it up. When we're doing the training of teachers, we actually demonstrate it with children. So the teachers see how to work with children. What is the tone you use? What is your body language? How do you talk to children? How do you allow children to respond? How do you avoid judgment? We demonstrate it with the children. But having said that, it's very easy for teachers to get into their default setting of being judgmental, being harsh, because that's all they've got used to all these years when they were themselves in school. But which is why we recommend that we need to have ongoing support for teachers. If we can support, say, a group of teachers after training them, after they've seen us work with children, then we watch them working with children, and we sit with them and discuss what went well, why did you think this did not go off well, what could you have done slightly differently, and that kind of thing. So when we give them that kind of feedback, then it actually begins to, there are some internal changes that happen in teachers. And once that happens, then there's a certain habit that's formed. So, before that habit formation takes place, you need to support teachers. Otherwise, they'll enjoy the session and then they'll go back to doing whatever they were doing. So, which is why you must, we rarely try and do training without support. You have to support, because it's in the support that you can actually find out what could be potential areas where that teacher or those teachers need help. And then we need to help them. The idea is not to criticize the teacher. We want to help the teacher. So the idea is to help, because when the teacher feels that, yes, when I work with children this way, it makes sense and children enjoy it, I enjoy it. If the teacher feels that, then she will always do it, even when nobody's watching them. So we need to provide them time. Any kind of learning and change in behavior requires time. And I think that time needs to be provided. Thank you, Maya. I'll ask next question from Dr. Prerna and Ms. Nasreen. Actually, as I also appreciated the way you have explained the ecosystem approach for bringing out gender lens, would love to know, Dr. Prerna and Ms. Nasreen, that if while driving this community and school level change with respect to gender, working with, and specifically in respect of Jharkhand, if you can share your experience as well, what has been the initial level of challenges which you have to face or come through, and how you were able to resolve while bringing that in community demand generation? Like the demand or the concern or the sense should come from the community so ownership can be proper. What has been that experience and what has been those challenges, if you would like to share, and how we have been able to overcome them? Or maybe some challenges are also ongoing, sometimes we just can't do something about them. So would love to hear on that lens as well. Nasreen, आप share करना चाहेंगी, and then I can come in a little later. करूँ प्रेरणा, मैं ऐड कर लूँगी. So thank you, Parul, for that question. I think you've actually hit
hit the nail hit the nail on the head directly. Challenges are immense, and it's never easy to start a conversation around gender. तो एक तो जब आप जेंडर की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों जरूरी है इस पे काम करना, क्या वाकई में is this the way to really go about it? But I think we've been able to, with our work with JEPC and support from JEPC that we have, that is something that we've been able to establish pretty consistently, that there's a need to work with a very strong gender lens, with adolescents across levels. तो स्कूल के अंदर तो वो बात अब तय हो गई है कि हाँ, एक जेंडर लेंस और एक एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज आता है वो आता है जब हम टीचर्स के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप टीचर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो टीचर्स हैं या हम हैं, जो जितने भी लोग जेंडर के मुद्दे पे जब चर्चा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक you have to bring in yourself to it, like I said, and that's very very discomforting, because you start challenging a lot of what happens in your own life. आपके खुद के जीवन में क्या हो रहा है, कैसे आप उसको नेगोशिएट कर पा रहे हैं, and then there's this tendency कि नहीं जो है वो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो जेंडर का मुद्दा है उस पर चर्चा कभी भी एक सीधे तौर पर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। There's always going to be questions, there's always going to be multiple layers that one has to constantly deal with, and there is no right or wrong answer, because at the end of it, it's about a perspective, right? So that's another key challenge. In terms of working within the communities and within the schools also, I think something which we've been able to address is that we've been able to really revive a lot of the platforms very well. चाहे वो SMCs हों, which usually we see are pretty dormant, या वो बाल संसद जब हम बात करते हैं तो बच्चों के साथ engage करना, ये ensure करना। अब जैसे बहुत छोटी सी बात है कि जब बाल संसद शुरू होता है तो जो पोजीशंस बच्चों को दी जाती हैं उसमें लड़कियों को कौन सी पोजीशन दी गई है, लड़कों को कौन सा काम दिया गया है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उसमें भी होता है, that's also gendered, कि लड़कियों को बोला जाएगा कि पानी लेकर आओ और लड़कों से कहा जाएगा कि अच्छा तुम ऊंचे चढ़ के जरा कुछ लेकर आओ या बाहर से कुछ लेकर आओ। Now the pain starts right from there when the students themselves start saying कि ये तो ठीक नहीं है, हम तो क्लासरूम में अगर बात कर रहे हैं कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर को हमें ब्रेक करना है, they start challenging it themselves. एक मैं और ऐड करूंगी and then I'll hand it over to Nasreen. One of the big challenges that we faced during the pandemic was this constant tension between ensuring that we are able to reach those who have access to technology. First, how do we do also do not have access to digital technology? क्योंकि पूरा जब पैंडेमिक के दौरान पूरा जब एजुकेशन सिस्टम मूव कर गया और कहा कि चलिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी हो गया उस वक्त में हमारे लिए ये सोचना कितनी ऐसी लड़कियां और लड़के ये हैं जिनको हम इस तरीके से पीछे छोड़ते जा रहे हैं। And this was a real challenge that we continued to kind of work with. हमने community में मोहल्ला classes चलाई, हमने community में smaller group activities करी, हमने facilitate, क्योंकि teachers को भी community में जाके काम करने के लिए कहा गया था, तो हमने उनका interaction facilitate किया, तो जो भी हम support दे पाए हमने दिया। पर ये एक शायद हम सबको सोचने की जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि हम डिजिटल तौर तरीकों से engage करेंगे यंग लोगों के साथ क्योंकि उनको एक्सेस है, क्या हम कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जो कि बड़ा नंबर है जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं, सोचने का। नसरीन, ओवर। थैंक यू प्रेरणा। तो कुछ जो लर्निंग्स तो शेयर हम लोगों ने किया था, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत कुछ रहे हैं। जैसे प्रेरणा ने बहुत कुछ शेयर किया है, तो अभी टीचर्स की जब बात करते हैं तो जब ट्रेनिंग के दौरान या कहेंगे कि जब उनकी ट्रेनिंग
की बात होती है तो हमारे पास 70% मेल टीचर्स हैं और 30% फीमेल हैं। तो एक वहां पे ही एक लाइन ड्रॉ हो जाता है कि ये ट्रेनिंग किसके लिए है। एक तो कुछ अपने से भी कनेक्ट करने की बात होती है, तो वो एक कनेक्शन जो है जब टीचर्स अपने साथ भी करते हैं, वो छोटी छोटी बातें वो शेयर करते हैं कि उनके साथ क्लासरूम में मेल टीचर के साथ में वो कभी कैसे बैठ करके बातचीत नहीं कर पाते थे या बात करते थे तो किस तरीके के नजरिए से सब उनको देखते थे। तो जब ये शेयर होता है तो अपनी छोटी छोटी बदलाव जब होती है तो मेल टीचर की जो कहेंगे कि शेयरिंग होती है वो बहुत अच्छी शेयरिंग कहेंगे कि हमने कोशिश किया था अपनी वाइफ को आज चाय पिलाने की, चाय हमने बनाया था। वो मतलब ये बड़ा मतलब एक ये लगता है कि उन्होंने कोशिश की, आज एक बार चाय उन्होंने बनाया है। तो ये एक बदलाव उन्होंने अपना इस तरीके से उन्होंने शेयर करना शुरू किया। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो हमारे फीमेल टीचर है उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और उनमें ज्यादा बदलाव आना जरूरी है। हमें ये बदलाव लाने की इतनी जरूरत नहीं है। तो शायद ये बहुत ट्रेनिंग के बाद, लेकिन अब देखेंगे कि हमारे टीचर्स जो भी मेल भी है वो काफी चेंज उनमें, उनके पर्सपेक्टिव में काफी चेंज आया है। और चुनौती भी बहुत सारी है जो हमें लगता है कि अगर हम स्कूल में 2 टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो और सारे टीचर्स हैं जिनको हमें और भी ट्रेन करने की जरूरत है और बच्चों के साथ उनका भी इंटरेक्शन होता है। जैसे प्रेरणा ने स्कूल की बात कही तो वो अभी भी दिखता है कि कोई बेंच हटाना है तो लड़के ही उठाएंगे, झाड़ू लगाना है तो लड़कियां ही करेंगी। यूनिफॉर्म की जहां तक बात है उसमें भी वो नजरिया जो है वो अभी भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ तो शेयर होते हैं एडोलेसेंट की तरफ से भी, बॉयज की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में भी जो एक है ना, तुम लड़के हो तुम्हें रोना नहीं है, चोट भी लग गई तो तुम क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या, ये बात अभी भी हम कहते हैं वो बहुत दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस को हमें या हमें कहेंगे कि इनको और बहुत काम करने की जरूरत दिखाई देती है। और जो हमारा ड्यूरिंग कोविड पीरियड, शायद हम वापस फिर वहीं पे चले गए जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब उनको हम घर में काम के बंटवारे की बात कर रहे थे और वो काम शुरू कर चुकी थी, फिर वो वहीं पे आके रुक गया कि तुम्हें घर का ही काम करना है और तुम्हें बाहर नहीं जाना है। स्पोर्ट्स की जब बात करेंगे तो एक तो स्पोर्ट्स खेलना ही उनके लिए या रूरल एरियाज या तक कम्युनिटी में एक रिस्ट्रिक्शन जो है कि क्यों खेलना है, तो एक वो चैलेंज अभी भी है। लेकिन एडोलेसेंट हमारी अब बहुत पॉकेट्स में ये भी है कि अपने इस नॉर्म्स को ब्रेक किया है और यूनिफॉर्म की डिमांड वो हमारे पीआरआई मेंबर्स के साथ कर रही हैं कि हमें फुटबॉल चाहिए, हमें भी खेलना है और ग्राउंड सिर्फ लड़कों का नहीं है, हमारा भी है। तो एक टाइम फिक्स करें आप कि लड़के कब खेलेंगे, लड़कियां कब खेलेंगी। तो ये अच्छा लगता है। फिर भी हमें और भी उनके साथ काम करने की जरूरत है। थैंक यू नासरीन जी, मतलब बहुत डिटेल्ड आपने रिस्पांस दिया। और आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन भी था शाहिद की तरफ से, क्वेस्ट अलायंस की, एसएमसी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या हमारे चैलेंजेस, आई थिंक कहीं कहीं एस्पेक्ट पे आपने उन्हें छुआ भी। आई विल क्विकली रिक्वेस्ट सुजीत, आपने अपना हाथ रेज, सुजीत मंडल, यस यू रेज योर हैंड, इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर क्वेश्चन और थॉट, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू शेयर। या थैंक्स। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। अभी मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर प्रेरणा और नसरीन मैम। एक लाइन हम पढ़े अभी सेशंस में कि बराबरी के बाद हम सब बच्चों के साथ। तो मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन रहा था स्कूल्स में, मैंने देखा कि क्लास 8 से लेके 12 तक लड़कियां काफ़ी ज़्यादा है सरकारी स्कूल में और लड़के कम हैं। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुआ था कि हाँ शायद चाइल्ड मैरिज कम हो गया है। लेकिन बाद में मैं जब उसको
थोड़ा रिसर्च किया, बातचीत किया टीचर्स से, पता चला कि जो पेरेंट्स थे वो अपने जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, और जो बच्ची है उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उनका सोच कहना कि ऐसा रहा कि बच्ची पढ़ेंगे उसके बाद शादी करा देंगे और जो लड़का होंगे वो घर संभालेंगे, ऐसे एक सोच लेके प्राइवेट स्कूल में भेजते। तो जब मैं बातचीत किया एक बच्ची से कि ऐसे ही, तो उन्होंने अपने इमोशन शेयर किया कि पता है सर, मेरा भाई, छोटा भाई मेरे से अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। काफ़ी इमोशनल हो गई थी, उसको भी सीखने का मन है, पढ़ने का मन है, लेकिन ये जो एक सोच है, इसके वजह से झारखंड के जो लड़कियां हैं बहुत पीछे हो जा रहे हैं, मैं जो ऑब्जर्व किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे ओवरकम करें एज लॉन्ग पीरियड, और जब कोई एक बच्ची ऐसे अपना इमोशन शेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोल के उनको इनकरेज करें। तब मेरे पास कोई लैंग्वेज नहीं था उनको समझाने का, कुछ इनकरेज कर पाए हम। जी थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये शायद ये इस तरीके का एक्सपीरियंस हम सबका रहा है जिसने भी झारखंड के स्कूल में काम किया है। हम जानते हैं कि लड़कियों के लिए हमेशा एक ये बड़ी दिक्कत होती है। इनफैक्ट आजकल हम ये देखते हैं कि माँ बाप लड़कियों को इसलिए भी स्कूल में दाखिला कराते हैं जिससे कि अच्छा लड़का मिल जाए। दैट्स द की ऑब्जेक्टिव। लड़की पढ़े और पढ़ के कुछ कर पाए, दैट्स नॉट द की ऑब्जेक्टिव। अब है कि अगर लड़की 10वीं पास करेगी तो लड़का अच्छा मिलेगा, नौकरी वाला मिलेगा। जो बात आपने कही सुजीत, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है that while these parents, बहुत सारे ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, आई थिंक जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि जहाँ पर वो लड़की मौजूद है क्या हम उसको वो तरीके सिखा सकते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली से नेगोशिएट कर सके। फॉर इंस्टेंस हमने की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी प्लैनेट गर्ल्स के बाद कि बहुत सारी लड़कियां जो क्लास 10 में थी और 10th के बाद काफी बड़ा एक नंबर ड्रॉप आउट होता है। और वो इसलिए ड्रॉप आउट होता है कि अगर आप फेल हो गए तो फिर जाहिर सी बात है नो वन इज गोइंग टू लेट यू गिव द नेक्स्ट एग्जाम। कंपार्टमेंट एग्जाम तो कोई देने नहीं देता है, रजिस्टर करने नहीं देता है, उसके बाद सीधे आपकी शादी हो जाती है। आप अगर फेल नहीं भी हुए तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्लास 11 में एडमिशन लेने दिया जाएगा। हमने ये पाया कि लड़कियों ने एजुकेशन को नेगोशिएशन टूल बनाया। आफ्टर सेवरल ऑफ आवर सेशंस वी फाउंड, जब हमने अपना क्वालिटेटिव स्टडी किया, कि लड़कियों ने पेरेंट्स से ये कहना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, अगर मैं भाई से बेटर नंबर लेकर आऊंगी तो क्या तुम मुझे 11वीं में मेरा दाखिला कराओगे? और अगर मैंने 11वीं में और बेटर नंबर लेके आया तो विल यू मेक श्योर दैट आई गेट टू गो टू द कॉलेज? विल यू मेक श्योर दैट आई गेट अ मोबाइल फोन लाइक माय ब्रदर हैज? बिकॉज नेगोशिएशन सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन का नहीं है, नेगोशिएशन हर छोटी छोटी चीज पर है कि मोबाइल फोन एक्सेस मेरे भाई को है, मुझे नहीं है। खाना बेहतर शायद मेरे भाई को मिलता है, उसको शायद 10 रुपए मिलते हैं जब वो स्कूल जाता है, मुझे नहीं मिलता है। जब उसे स्कूल जाना होता है तो उसके पास एक बाइक होती है या एक साइकिल होती है, और मुझे 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है और उससे पहले मुझे घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाना होता है। तो नेगोशिएशन हर स्टेप पे करना है। तो शायद हर चीज के लिए हम सपोर्ट ना प्रोवाइड कर पाए उन्हें, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनको स्किल सेट प्रोवाइड करें जिससे कि वो नेविगेट कर पाए इस तरह का जो एक डिफिकल्ट सोशल नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की बार बार उन्हें जूझना पड़ता है। और ये बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमने ये भी पाया कि ज्यादातर लड़कियां, बच्चियां इसलिए अपना करियर प्लान नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कल को शादी हो जाएगी तो क्या वो काम करें या ना करें इसका डिसीजन उनके हाथ में है ही नहीं। उनका जिस घर में शादी होगी वो वाले घर के लोग वो डिसाइड करेंगे। तो ये एक बड़ा डिसहार्टनिंग फैक्ट है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लड़कियों को वो पूरा स्किल सेट तैयार दें और ये समझ उनकी तैयार करें कि वो अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं। Having said that, the onus is not alone on them. हमने पेरेंट्स के साथ कम्युनिटीज में काम किया, हमने पंचायत के साथ कम्युनिटीज में काम किया और हमने पंचायत से बाकायदा कमिटमेंट लिया कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी बच्चियां इस
अगर वो पढ़ना चाहती हैं, अगर वो कॉलेज जाना चाहती हैं, ये जितने बैरियर्स हैं उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे? And the most interesting part is that when girls are able to negotiate, they're able to negotiate even with a lot of these community stakeholders who otherwise seem pretty distant. जो हमें लगता है कि पंचायत में लड़कियां जाके क्या करेंगी, पर लड़कियां वहां जा करके नेगोशिएट कर पाती हैं कि हमें ये जरूरत है। जैसा नसरीन ने कहा कि हमें स्पोर्ट्स खेलना है, सिर्फ जो ग्राउंड है वो लड़कों का नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से हम काम करें, और जो कुछ सपोर्ट चाहिए उस काम के लिए लड़कियों को वो आगे बढ़ने के लिए वो हम प्रोवाइड करें। सॉरी फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन रिस्पॉन्स। Thanks, Prerna. Maya, please, you raise your hand. Would love to hear your thoughts. Yeah, I just want to just in response to, I think Prerna explained it beautifully in terms of negotiation, but I just want to also respond to Sujit's question, the whole thing of girls going to government schools and boys going to private schools. The thing is, that's why it is so important for us to make our government schools better, because then slowly the boys will also come back to the government schools. It is important that government schools offer good education. When they're teaching English, they should be teaching it as well or even better than they're teaching in the low cost or budget private schools and so on. So I think that's where we have to be looking at improving our schools, improving the quality of interactions and learning that happens in our schools. So we can't just say, okay, because this is happening, we need to send our girls also to private school. That shouldn't be the thing. It is the government's responsibility to make their schools better too. And that's where we are, all of us are here to help them. So that's all I want to say. Thanks, Maya. Thanks, Prerna. I hope Sujit finds it helpful, as well as the entire room finds it helpful. Yeah, thank you. Vaibhavi, yeah, thanks. Vaibhavi, you have raised your hand. Can you unmute yourself and share your question? So hello everyone, and thanks for allowing me to question. So I have this question, since we're talking about sensitivity and seal and gender. So I also observed certain things. There is this rigidity. So there was this workshop where we were discussing curriculum around puberty and how we should tackle it. So oftentimes we talk about menstruation and what girl child has to face in the society when we talk of puberty. But there is this rigidity around boys. So I have not seen a single male teacher trying to converse with a boy around the awareness and the need to understand what is nocturnal ejaculation or something like that. What a boy must go through or is going through puberty, and how even if it is right or wrong, and how morally or ethically it is conceived by the society. So I think how do we make a safe space, create a safe space for the male teachers to be comfortable to talk to the boys? So the male teachers would be comfortable with the girls talking about menstruation around the female teachers, not even directly to themselves. So this is what is happening right now. We would be okay talking about menstruation in a close circle, but no one talks about, like, I've not noticed anyone talking about a boy's life during puberty. So what should we be doing to create a safe space for that, so that teachers could start dialogue? I think Maya would love to hear her thoughts as well, that how to create that culture amongst I'm sure Prerna and Nasreen may also have, but I'm going to look at using the quality circle time space to look at it. I think that the question that was asked is a very important question, because a lot of times teachers, whether male or female, feel very embarrassed, very awkward about, and they don't know how to deal with it. They feel it's very, children should not be talking about this and so on. But these are important things. So it's important to take away the embarrassment and the guilt of discussing it. So one way is to use the listening system, where you could have a little box where you can put all your questions
connected with sexuality. Put it there. So we don't know who has asked. It could be a question from the girls. It could be a question from the boys. It could be questions about girls about the boys and boys about girls, and so about girls' sexuality from boys, etc. And then what we have to do, obviously a teacher in one circle session can't discuss all of them. So a teacher can say that, okay, in today's circle time session, we'll discuss 3 of these issues, and you're just randomly picking it. The idea is that then the teacher, for the teacher also, it's not embarrassing when she or he does not know who has asked it. And you say, okay, this is what has happened. Now, why does this happen? And then the important thing is to take out the embarrassment. And then you'll find that the girls, and the boys actually speak very, very comfortably and confidently. I'll give you an example. This happened many years ago, where we were working with the school. Sorry, I hope I'm not taking too much time. We were working with a school many years ago in the north, and this was a school where they started doing circle. They're very committed to circle time. And as the kids came into adolescence, they started doing circle time separately. Girls circle, boys circle. So then they said, we don't know, the girls are not speaking when we do it co-ed, and the boys don't speak when we're doing it with the girls. So I said, but are you taking other classes also, like that maths class and like science class and all like that? They said, no, it's only for circle time. So they said, will you show us what to do? So then I actually did a session with grade 12 students where, so they were about 17 plus years. And I said, your teachers are concerned about the fact that girls and boys don't talk to each other. Why do you think this happens? This is not sexuality, but this is just about, it's really about talking. And they had such useful points to make. They said, sometimes when we talk, other friends make fun of us. Then they start teasing us. Sometimes teachers, start, passing comments. Those are the things that the kids said. So I said, so do you think this is okay? This is good that girls and boys don't talk to each other from 7th upwards? So they said, no. I said, why do you think it's not? This is the circle time format. So all I do is ask questions. All the person or facilitator does is ask questions gently. So they said, it's not good because soon we're going to go into college and then we will be working. We need to be able to deal with members of the opposite sex and so on. So I said, so what are you going to do about it? The idea is that you put the responsibility for them. So they said next time when we're having, say, practicals for science practicals, we will, we will have sessions where we'll pair up girls, boys, or we could eat lunch together, or we could, if I have a maths problem which I can't solve, a girl will not ask a boy, or a boy will not ask a girl. We'll ask each other. So they had very valid points. So this is one way. This is not sexuality, but I would say even talking about whether it is, nocturnal, ejaculation or anything to do with menstruation, everything, all these can be discussed using a circle format. Over to you, Prerna. I'm sure you have things. No, thank you, Maya. That was really helpful. I just want to look at it from a slightly different perspective. जो सवाल आपने वैभवी पूछा, I think उसको थोड़ा सा ये भी देखने की जरूरत है कि हम अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कितना कंफर्टेबल है सेक्सुअलिटी पे बात करने के लिए, और नॉट जस्ट सेक्सुअलिटी, आल्सो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स पे बात करने के लिए. While now there is a bit of a change in terms of accepting that menstrual health needs to be spoken about, आप अगर देखें तो सिर्फ वो फोकस menstrual hygiene पर है, वो फोकस उसके beyond नहीं जाता है. We don't talk about anything beyond that. We are happy to just say, okay, girls bleed, therefore they need these products. उनको वो products हम provide कर देंगे. That is it. उसको भी हमने एक silo कर दिया. So as a system, we are not comfortable talking about sexual and reproductive health and rights. चाहे वो लड़कों का हो, चाहे वो लड़कियों का हो. Menstrual health, interestingly, over a period of time, for various reasons, has now come into the fold of, they've very neatly taken it out of the sexual and reproductive health and rights, which is extremely worrying for me. Having said that, I think the suggestion that Maya gave is absolutely great. You can always have this question bank in the classroom where adolescents can put in their questions and that can be discussed.
But I think what's also very important is to recognize that unfortunately, when we talk about gender equity and gender equality, there is an inherent understanding कि ये तो लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियां पीछे हैं इसलिए उनको पढ़ा दो तो जेंडर इक्वालिटी हमने अचीव कर ली, और ये अक्रॉस माइंडसेट है। आप देखेंगे जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी की बात जितनी हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर करते हैं, शायद बहुत जगहों पर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम वाकई में उसके लिए काम कर रहे होते तो इंडिया में जो women work का जो contribution to the workforce, that won't have really dropped. तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में पिछले 15 साल में हमने देखा है वो 33% से ऑलमोस्ट 20% पे आके 19% पे आके रुक गया है। द इशू इज दैट हमने जेंडर इक्वालिटी को भी अपनी समझ के हिसाब से बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है। अच्छा लड़कियों को पढ़ा दो, 12वीं करा दो, हाँ जेंडर इक्वालिटी अचीव हो गई। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो उनका कोर मुद्दा है वो ये है कि लड़कियों की शादी होनी चाहिए एंड गर्ल्स का जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। गर्ल्स आर नेवर एजुकेटेड विद द फोकस ऑन fulfilling their aspirations or achieving their potential. It is all about how she will then become a better mother, how she will then become a better wife, how she will then take care of the household. And therefore, it is important that we also start looking at gender equality with a larger perspective of gender rights and gender justice. हम जब बात करते हैं कि लड़कों के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, that's also equally unfortunate because boys are receiving information from very shady sources on internet. They have access to internet, they have access to mobile phone, they use all kinds of sources for the information on basic things that they should otherwise know. So for instance, you talked about nocturnal ejaculation. Something as simple as that, which is a natural phenomenon, is not spoken about even in context of growing up, even in context of the fact that adolescence as a stage is often taught in school. But we still want to make it very neat and clean. We don't want to get into anything which disturbs the so-called harmony or puts the minds of the young people. That is the unfortunate part. The unfortunate part is that till date, our entire system does not want to talk about real issues that adolescents deal with. We still want to keep it very clean. Sorry for complicating it rather than answering your question. Thanks, Prerna and Maya both. I hope Babu and the room they just had some couple of learnings from your explanation as well. It was very insightful and experience based. I could sense the passion as well. It was coming when you were responding. So it was very interesting. I will quickly ask Avinash to unmute himself and share his question as well. I think Avinash's question will be the last question which you will be able to take, considering we have just 3 minutes left. Avinash, please lead. I'll just okay. थैंक यू पारुल जी। तो मेरा सवाल ये है कि अब इससे पहले हम लोग बाल विवाह की बात कर रहे थे, तो कितना मुश्किल था कि ऐसे बच्चियों का पता लगा पाना कि उनका बाल विवाह होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर विद्यालय में होता ये है कि चुपके से उनका विवाह करा दिया जाता है, टीचर्स को भी नहीं पता चलता। जैसा कि अभी एक KGVV में गए थे तो वहां पे हमें पता चला था। तो ऐसे बच्चियों के बारे में पता करना और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता था, और किस तरह से आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते थे, तो इस चीज को हमको समझना है। अविनाश, मैं अपनी साथी जो नसरीन है, डॉक्टर नसरीन जमाल, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो ये क्वेश्चन को आंसर करें, और फिर अगर जरूरत होगी तो मैं उसमें ऐड भी कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू प्रेरणा। तो अविनाश, बिल्कुल आपने जो कहा कि बिल्कुल ये चुप से ये पता भी नहीं लगता कि कैसे उनकी शादी हो जा रही है, ये बिल्कुल सही। तो आप उमंग का अभी जो हम सबने शेयर किया था कि हम एडोलेसेंट के साथ में कम्युनिटी में भी काम करते हैं और उनके साथ में हमारा एक पूरा करिकुलम है जिसको लेकर के हम उनके साथ में बातचीत करते हैं, और एडोलेसेंट हमारी उसमें आती हैं और सारे मुद्दे पे चर्चाएं होती हैं। वो तो कहीं ना कहीं ये भी उनको वहां से एक लीडरशिप
या कहेंगे कि एक तरीके से वो अपनी बातों को शेयर करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ वो अपने या तो पीयर के साथ में या तो अपने फ्रेंड के साथ में ये बातें जरूर वहां पे रखती हैं। और ये पूरा हमारे करिकुलम में ये भी उनको जानकारी दी जाती है। पूरे सेशन को ले में अलग अलग लाइफ स्किल भी है, एस्पिरेशन भी है, और तो उसमें ये उनको जरूर इस तरीके से पता लगता है कि हाँ, हमें कब शादी करनी है, और शादी अभी करनी है या बाद में करनी है, या पढ़ाई पूरी करनी है। तो ये अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे कार्यक्रम के आसपास या हमारे इर्द गिर्द जितने भी एडोलेसेंट है इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये हम लोगों ने कोशिश तो की है कि उनको हम इस तरीके की बात करें और वो अपनी बातों को घरों में भी पहुंचाए। ये भी हुआ है, हम ऐसे हमारे साथ बहुत सारे केस स्टडी है, पॉजिटिव स्टोरी है, जो एडोलेसेंट ने अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के सामने रखा है कि हमें अभी पढ़ाई करनी है, शादी बाद में करनी है, या ऐसी भी बातें हुई है कि हमें किसी को शादी करनी है, वो भी हमें पसंद है, वो भी पेरेंट्स के सामने उन्होंने रखा है। तो ये बिल्कुल देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से एडोलेसेंट अपनी बातों को रखना शुरू की है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे खुल के एडोलेसेंट के साथ बात हो रही है या बराबरी की बात हो रही है, वहाँ पे ये मुद्दे निकल करके आते हैं, तो वो अपने उसको सॉल्व करने का एक रास्ता वो निकालती हैं, ये कह सकते हैं। प्रेरणा, आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। मैं बस आखिरी के सेकंड में ये कहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम एक सेफ स्पेस क्रिएट कर पाए। और जब हम सेफ स्पेस की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पर मैं खुल के अपनी बात कह पाऊं, रख पाऊं, उस पर चर्चा हो पाए बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी रेप्रिमांड के मेरी तरफ, मेरे लिए। और ये हमने देखा है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कम्युनिटी हो सकता है कई बार आपको ये चीजें पकड़ में ना आए, पर जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो जो एडोलेसेंट ग्रुप्स अगर इसकी तरह क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें ये बातें ज्यादा आसानी से पकड़ने में आती हैं। हालांकि कोई इसके लिए हमारे पास फूल प्रूफ तरीका नहीं है कि हम एग्जैक्टली हर केस पता चल पाए कि एक बच्चे की शादी की प्लानिंग की जा रही है, पर जब आप सेफ स्पेस तैयार करते हैं, और जो बात नसरीन ने भी कही, तो कम से कम बच्चे अपनी बात रख पाते हैं। और साथ में जब कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ आप काम करते हैं तो पेरेंट्स भी उनकी बात सुनने के लिए थोड़ा ज्यादा तैयार हो। तो वो दोनों तरफ से ही काम करने की जरूरत है इसके लिए। थैंक यू। हाँ, प्रेरणा, एक बात और इसमें ऐड करना चाह रहे थे कि एक तो ये बिल्कुल सही बातें है कि छुप के शादी हो जाती है, लेकिन चर्चाएं जब होती है ना, तो ये भी बात निकल करके आती है कि लड़कियों को अगर वो घर में बैठी हैं या उनकी पढ़ाई छूट गई, ड्रॉप आउट हो गई, या शादी ही तो उनका लक्ष्य है, फिर क्या करेंगे? क्योंकि घरों में ये चर्चाएं तो होती नहीं ना कि वो बराबरी से पढ़ाई करेंगी, बाहर जाएंगी, तो उनको कोई ऑप्शन भी तो दिखाई नहीं दिया जाता या दिया नहीं जाता है। जैसे प्रेरणा ने बताया कि वो प्लेटफॉर्म, अगर वो जगह उनको मिलती है जहां पे वो शेयर करे, तो फिर वो आगे बढ़ने के मौका उनको दिया जाए, तभी ये हमें लगता है कि ये बातें रुकेंगी, कम होंगी। क्योंकि वो मौका ही उनके पास में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी सोचती है कि अगर मेरे घर वाले अगर शादी कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी भी हाँ या ना दोनों बातें उनमें होती है। तो हमें ये देखना है कि उनको हम वो मौका भी दे कि वो भी बराबरी से पढ़े, अपने लक्ष्य को देखे। ये हमें वो भी अवसर देना बहुत जरूरी है। Thank you, Prerna. Thank you, Nasreen. Avinash, I hope this explanation or this sharing helped you. पारुल जी, एक उसमें पॉइंट रह गया था, मतलब पेरेंट्स को हम किस तरीके से कन्विंस करें। जैसे हमारे सामने एक सिचुएशन आता है, केजीवीवी में किसी एक बच्चे की शादी हो रही है,
टीचर्स भी कोशिश किए, वो शादी नहीं रोक पा रहे हैं। उसमें हम क्या रोल निभा सकते हैं, उस पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, ये एक चीज हमको समझना था। नासिर, आप शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? ओके, अविनाश, एक तो बिल्कुल कि हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे, ये बिल्कुल एक अलग केस वर्क हो गया ये। तो हम जरूर उनको ये बता सकते हैं कि उनको भी हम अवसर दे, उनको भी हम पढ़ाई के मौके दे। तब तो हम देखिए, अगर एक सवाल उनके सामने ये खड़ा करें कि बेटी की शादी में अगर हम लाख रुपया तो जरूर खर्च करते हैं मिनिमम, अगर देखिए अगर वो पैसा उनकी पढ़ाई में खर्च करे तो शायद उनको भी आगे कुछ ना ऐसा काम पे वो जरूर जुड़ेंगी। तो वो भी उनके लिए होगा कि हाँ, वो अपने पैरों पे भी खड़ी है और उसने अपने लक्ष्य को भी देखा है। तो ये भी लड़कियों के साथ में बात करना या पेरेंट्स को ये भी बताना कि वो पैसे, शादी के जो पैसे हैं, पढ़ाई में भी हमें अगर खर्च किया जाए जैसे लड़कों के लिए करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और हमें लगता है कि पेरेंट्स सुनेंगे भी, क्योंकि ये उमंग का जो हमारा पीसीआई जिनके साथ हम वुमेन कलेक्टिव या एसएचजी के साथ बात करते हैं, उनका भी एक करिकुलम है जिसमें इस तरह की बातें भी उनके साथ में होती हैं कि पेरेंट्स भी, माँ भी कैसे बेटियों को सपोर्ट करेंगी, उनकी शादी की जो आकांक्षाएं हैं उसको देखते हुए कैसे उनको पढ़ने में मदद करेंगी, फिर शादी की बात करेंगी। तो ये हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उनके साथ बातचीत, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है उनके साथ में शेयरिंग, बातचीत, वो स्पेस, वो उनको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार में बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें बार बार उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है, तब जाकर के हमें लगता है कि ये इस तरीके का माहौल जो है वो क्रिएट होगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगी कि अविनाश, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब आप किसी पेरेंट से ये पूछते हैं कि आपके बच्ची क्या करना चाहती है, उनको कभी नहीं पता होता है। और वो उसका कारण ये है कि, और ये मेरे साथ हुआ है कि हम एक गांव में बैठे थे झारखंड के, और हमने एक पेरेंट से पूछा कि आपने कभी अपनी बच्ची से पूछा है कि वो आगे क्या करना चाहती है? और उन्होंने बड़ी अजीब से नजर से मुझे देखा और बोले, ये सवाल तो हमसे किसी ने कभी नहीं पूछा। तो जो बात माया कह रही थी ना कि क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला, मेरे दिमाग में वो आता ही नहीं है कि इस तरह की कोई चर्चा हो सकती है। तो सिर्फ शादी के समय नहीं, पर ये जो चर्चा है पेरेंट्स के साथ, ये एक कंटिन्यूअस चर्चा है कि बच्चे की एस्पिरेशन। और ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने पेरेंट्स में मदर्स और डॉटर्स के हमने ये गुट बना करके, और हमने उनके बीच में चर्चा करवाई कि माँ क्या चाहती है अपनी बच्ची के लिए और बच्ची अपने लिए क्या चाहती है, इसके बारे में वो एक दूसरे से चर्चा करें। तो जब ये चर्चा होने लगती है तो जो कम्युनिकेशन चैनल्स है ना घर के अंदर, वो खुल जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये बहुत एक मिसिंग पीस होता है किसी भी फैमिली के अंदर, जहां पर खासकर की किशोरी लड़कियां बिल्कुल इनविजिबल होती हैं। और जब मैं इनविजिबल कह रही हूँ, उसका मतलब ये है कि उनकी ना तो कोई बात सुनी जाती है, ना उनसे पूछा जाता है। बस ये अज्यूम कर लिया जाता है कि शादी उनका एकमात्र मकसद है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें हम और बहुत पहले से काम करें, दोनों ही तरफ से। लड़कियों को भी हम स्किल सेट दें कि वो नेगोशिएट कर पाए अपनी फैमिली के साथ, और साथ में पेरेंट्स के साथ भी काम करें कि वो अपनी बच्चों की बात सुनने के लिए और तैयार हो और तत्पर हो। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Prerna, and thank you, Maya, as well, for responding in the chat box. I'm really sorry, Amit. It will be really helpful. I am aware that आपने अपना हाथ raise किया हुआ. It will be really helpful if you can share that in the chat box, and we can extend it to the panelists, your queries. Unfortunately, we are running out of time, and we are 10 minutes over as well. I would like to close the session. And before doing that, first of all, thank you all the participants for joining the session and staying here, and also asking so many interesting questions with the panelists, so that we can understand that how on-ground implementation can be ensured with the learning and the concept we are learning from Maya and Prerna and Nasreen.
And thank you so much, Maya, Prerna, and Nasreen, to come to this session as a panelist and share your expert understanding as well as experiences, and so passionately and comprehensively responding to all the queries which has come across. Thank you so much. Thank you Bye. very Thanks a much. lot. Bye. Thank you. Have a Bye. great evening, everyone. Thank you. All of you. Bye. Bye. Thank you. Thank you.